11 जुलाई डे 6 इन सिंगापुर। क्या करने वाले हैं आज हम? आज हम हॉप एंड ऑफ टूर करने वाले हैं, जिसमें हमारा सारा सिंगापुर हमें दिखाया जाएगा। इज़ अ स्मॉल सिटी टूर ऑफ 30 मिनट्स। एंड उसके बाद हम जाएंगे ग्लोबल फ्लायर देखने, यहाँ पे सिंगापुर फ्लायर जिसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारी होगी नाइट सफारी। जी हाँ, आज बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है और नाइट सफारी से पहले हम म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम भी करने वाले हैं। On the left hand side is the Sunset City itself, and from here you can walk all the way down to the City Hall where we are coming from, underground. We have shopping centers and all. They are saying the queue is small, so that's why they can also send only 2 people. Nighttime supper and daytime rest routine must be especially energy efficient at night safari. Only male Asian elephants or bulls have longer tusks. Train tiny organisms from the water using their specialized feet. हाय ट्रैवल ट्राइब फैमिली, कैसे हैं सब? तो सोनाली, आज है 11 जुलाई डे 6 इन सिंगापुर। क्या करने वाले हैं आज हम? आज हम हॉप एंड ऑफ टूर करने वाले हैं, जिसमें हमारा सारा सिंगापुर हमें दिखाया जाएगा। इज़ अ स्मॉल सिटी टूर ऑफ 30 मिनट्स। एंड उसके बाद हम जाएंगे ग्लोबल फ्लायर देखने, यहाँ पे सिंगापुर फ्लायर जिसे कहते हैं।
देन उसके बाद हमारी होगी नाइट सफारी। जी हाँ, आज बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है और नाइट सफारी से पहले हम म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम भी करने वाले हैं। तो हम लगभग अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे सिटी टूर पे, जैसा सोनाली ने बताया। कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्लेसेस कवर करें सिटी के अंदर, लिटिल इंडिया, धोबी घाट, मरलायन। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम सिंगापुर ग्लोबल फ्लायर जाएंगे, जहाँ पर 30 मिनट्स का एक्सपीरियंस लेंगे। जैसे लंदन आई है, दुबई आई है, वैसे ही सिंगापुर आई, आप बोल सकते हैं उसे। उसके बाद हम म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम जाएंगे, जो कि न्यू अट्रैक्शन है, और लास्ट में हम जाएंगे नाइट सफारी। तो डे 6 में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। और सोनाली, कैसी फीलिंग है सिंगापुर में? बहुत 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 मज़ेदार। आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर। जी हाँ, हमारा तो दिल आ गया सिंगापुर में। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। लेट्स होप यू एंजॉय द वीडियो। Left to right, you look at the buildings here. 50 to 60 million dollars. Yes, sir. Very expensive. Singapore land is very. Singapore is 6.2 million. Consists of all the races staying. A beautiful stadium. Look at the beautiful greeneries, Singapore landscaping. Another name for Singapore is the Garden City. You see this tower. This was our first airport. Icecream on the left is the spot. Beautiful iconic view on the left hand side, the seafront area. फ्लायर भी है। You'll see the old monuments, the Parliament House, Supreme Court, beautiful churches. ये बनाओ सोनाली। From here you got a very good view of the MBS, Marina Bay Sand. Yeah, that is the 57th floor is the weaving deck right on top. You can go up, you can use it. 57th floor with the 2 Italian restaurants. So you can see the big preparation is going on, preparing for the night formula race. The only race in the world, night race. On the left hand side is an Anglican church. This was built in 1860s. On the left as we turn is a City Hall. City Hall MRT station. We call it, locally we call it MRT, means rapid transport. The metro running underground. From here connect to any part of Singapore, east, west, north, south. We have 7 lines running across, established in 20. This one on the left is a new Supreme Court. Turning left, as we can see, followed by the Parliament House. These 2 buildings is new. Yeah, these 2 buildings built in 2000s. New buildings on the right side.
Singapore is a democratic country. We follow the British law. We have elections every 5 years. The Prime Minister is in power. On the left, as we said, extreme on the right, this was used to be the old Parliament House. Old Parliament House. And this is the Singapore Cricket Club. As I told you earlier, they are preparing in the field, on the field here, where we play the cricket all the way. Extreme on the left, City Hall, where used to be the Prime Minister office. On the right, you look at this artificial stadium. This is just built for the National Day, Singapore, SG60. We're celebrating 60 years. All these will be on the left side, VIPs, foreign delegates from all over the world. And extreme on the right for the public to sit down. 100 over 1,000 sitting capacity. See, they have planned all the way down. This will be the entrance, security check before you go in. This will be the security check area. It's still under construction. So all these were filled where the Britishers used to play cricket here. You have all the games, tennis, football, all the way through. It's a big preparation for the night. And the British came back in the park. District, financial center, all the way down. You name all the banks from 190 countries, all are here. Most of the headquarters from London, New York and Hong Kong, they have shifted to Singapore. So Singapore ranking in Asia #1 and #3 in the world. New York, London, Singapore. Okay, we are entering Marina Bay area. On the left hand side is the Suntec City. On 5 stars good hotels along this area in the morning and 7 to 10 in the evening. Yeah. So, and from here you can walk all the way down to the City Hall where we are coming from, underground. We have shopping centers and all that, yeah? Bistros, cafes, all underground. In the night time, we have very nice lighting and all that with the water fountain, water running down, up and down. Very beautiful. The city by itself underground. A very well planned city. You don't see much people here, but underground you will be surprised to see more people moving. You are not going there. You have to make yourself. And we stop over for photo taking. Those of you want to use the washroom, please do so. You walk straight to the main entrance. On the left and right, both sides is the washroom area, the toilets. So there's a big preparation is going on. You see the stages, all these are there, putting up the stage. This for the Formula 1 race here. And the race will start just Singapore flyer. The lighting you can see on top, all these are lighting meant for the Formula race F1. And it will be, time will become like this. You know, the way they make such a way, you don't feel any pain or dark. On the left you can see the Merlion. Look at the crowd there. So this place is very crowded. MBS Marina Bay Sand or Extreme on your left hand side. And the MBS here
Okay, for you, please remember where we're going to alight. The pickup point will be the same place where we're going to pick up. If you are lost here, okay, this on the left hand side is a Lao Pasar, the old market. This and a good, and they are open until 2 to 3 o'clock. This is one of the first and the Hindu temple to be built in Singapore. Then followed by the Chinese shape here. Most of them, as you can see, the Chinese bring the roots and the culture. सिटी टूर के बाद अब वक्त हो चला है कि हम सिंगापुर फ्लायर विजिट करें ऑन प्राइवेट बेसिस। तो हमने सिंगापुर फ्लायर कवर किया था। सिटी टूर के अंदर 20 मिनट्स का हॉल्ट था और साथ में टिकट्स इंक्लूडेड नहीं थी, तो दैट्स वाई हमें अलग से आना पड़ा सिंगापुर फ्लायर। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, जब आप सिंगापुर फ्लायर आ रहे हैं तो मेक श्योर करिए आपके पास 1 से 2 घंटे का टाइम हो, सो दैट अगर आपको क्राउड भी मिले तो आप इजीली कैप्सूल के अंदर बैठ पाएँ। अब बात करते हैं सिंगापुर फ्लायर की। सिंगापुर फ्लायर 2008 में ओपन हुआ था। इसकी टिकट प्राइसिंग की बात करें तो इट्स अराउंड 2700 to 2800, which will be around 25 Singapore dollars, not 25, I would say 35 Singapore dollars.
एंड अब बात करते हैं कैप्सूल्स की, तो इसके अंदर 28 एयर कंडीशन कैप्सूल्स हैं जो आपको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देते हैं सेंटोसा आइलैंड का, गार्डन्स बाय द बे का, मरलॉयन का, मरीना बे सैंड्स का। तो अब हम करते हैं व्यूज़ को एंजॉय। और सिंगापुर फ्लायर जो है वो सुबह 10 बजे के करीब खुलता है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो 10 AM to 10 PM इसका टाइमिंग्स हैं। अभी जब हम गए हैं तो सिंगापुर की नाइट रेस, F1 नाइट रेस की भी प्रिपरेशंस हो रही थी। तो अगर आप सिंगापुर फ्लायर एंजॉय कर रहे हैं अगस्त या सितंबर में, तो आपको डेफिनेटली F1 का ट्रैक भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जब रेनी सीज़न होता है या क्लाउडी वेदर होता है तो सिंगापुर फ्लायर ऑपरेट नहीं करता। उस केस में अगर आप टिकट परचेज करके यहाँ जाते भी हैं तो ये ऑपरेट नहीं करेंगे और आपको टिकट का रिफंड मिल जाएगा। बात करें इसकी 28 कैप्सूल्स में, तो जनरली जो कैप्सूल्स हैं वो नॉर्मल कैप्सूल्स हैं, एयर कंडीशनड है, आप बैठ सकते हैं, आप खड़े होके भी व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। और बात करें थोड़े और लग्जरी एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर 2 से 3 डाइनिंग कैप्सूल्स भी हैं जहाँ पर आप डाइनिंग कर सकते हैं, उसका कॉस्टिंग अलग है। और अगर आप किड्स के साथ जा रहे हैं तो यहाँ किड्स थीम बेस्ड कैप्सूल्स भी हैं जहाँ बच्चों को डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। अगेन आप सुबह के व्यूज़ अगर एंजॉय करना चाहते हैं सिंगापुर के तो उसका मज़ा अलग है। अगर आप रात को आते हैं तो आपको डेफिनेटली सिंगापुर की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, उनके ऊपर लाइटिंग, सब कुछ दिखने वाली है। और जैसे ही आप सिंगापुर फ्लायर को एग्जिट करते हैं तो आपको एक शॉप भी मिलेगी जहां आप मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और
मरीना बे सैंड्स मॉल में लंच करने के बाद अब वक्त हो चला था कि हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव करें। तो हमारे प्राइवेट ट्रांसफ़र्स के थ्रू अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम। म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम सेंटोसा आइलैंड से लगभग 20 to 25 मिनट्स की दूरी पे लोएन रोड, क्वींसटाउन, सिंगापुर में है। और ये जो हमारा जर्नी है ये एक लॉबी से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें अपने नेम्स के साथ साथ एक फ़नी सा आइसक्रीम नेम जैसा कुछ नेम बनाना पड़ता है, लाइक शेंकी चोको चिप, सोनाली क्रंची पाई, ऐसे करके। और फिर हम मल्टीपल रूम्स के थ्रू जाते हैं, जैसे एक मॉमी रूम है, कार्निवल रूम है, कैलिफोर्निया रूम है, मैग्नेट्स रूम है, बाउंसी रूम है, रेनबो टनल रूम है। और मल्टीपल रूम्स में हमें डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम्स भी देते हैं। तो गुड पार्ट अबाउट दिस म्यूज़ियम इज़ कि एक बार आप इस म्यूज़ियम में चले जाते हैं तो आप जितना मर्जी टाइम चाहे वो स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक रूम को पार कर लेते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते उस रूम में, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, बट देयर आर 5 to 6 रूम्स एंड इन आफ्टर एवरी रूम यू विल गेट 2-3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पर आप थक जाएंगे बट आइसक्रीम सर्व होती रहेगी आपको, एंड सारे फ्लेवर्स बहुत यम्मी है। मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ मैंगो, जो कि सेकेंड रूम के बाद, कैलिफोर्निया रूम के बाद हमें मिलता है। सुबह 10:45 AM म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम खुल जाता है और लगभग जो लास्ट टाइमिंग्स टू एंटर है वो 5:45 PM है। ऑफिशियल टाइमिंग्स टू क्लोज 6 PM है इसका। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो इसकी एक जनरल एडमिशन टिकट है विच इज़ अराउंड 3200, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्थ एक्सपीरियंस है। 2024 में खुला था ये, तो एक नई चीज़ है जो आप कहीं आपको दुबई वगैरह में आपने नहीं देखी होगी, तो आप सिंगापुर में एंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इनका जो ब्लैक सेसमे आइसक्रीम है या चॉकलेट आइसक्रीम है वो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
पैदल? हाँ दोनों करनी है हमें। You buy data. Three tiny organisms from the water using their specialized shell. Like those abilities, some spotted deer, these, such as buffaloes. Asiatic lions used to be found across India and the Middle East, but their natural habitat is disappearing. Now they are restricted to a very tiny area of India. Nighttime supper and daytime rest routine must be especially energy efficient. At night safaris, only male Asian elephants or bulls have longer tusks. जंगली बिल्ली का नहीं है। Destroy termites nest and to take नहीं नो। सोनाली वो मत करना शीशे पे। You'll see once the tram leaves. After the night safari, it was time to have delicious Indian dinner at Little India. हम हैं इस वक्त बालाजी भवन और टाइम हो गया है बहुत प्यारा सा इंडियन फूड खाने का। बहुत दिन हो गए थे इंडियन फूड एंजॉय नहीं करा था। ये इसी के साथ हमारा डे 6 फिनिश होता है और हम पहुंच जाते हैं चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट पे एक बार फिर से हम वॉटेक्स वाटरफॉल को इंजॉय करते हैं टर्मिनल 1 के ऊपर। और टाइम हो चुका है घर जाने का, बैक टू दिल्ली थ्रू सिंगापुर एयरलाइंस। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मिलेंगे, बात करेंगे टॉप 20 अट्रैक्शंस ऑफ सिंगापुर में एंड डूज एंड डोंट्स वाइल ट्रैवलिंग टू सिंगापुर। थैंक यू ट्रैवल ट्राइब फैमिली।